Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks witness losses of more than 1.5%. Sensex closes below 58,100 points and Nifty settles below 17,350. Rupee weakens by 12 paise to hit a record low against the US currency, and Brent crude oil prices plunge more than 3% to hover around $88 per barrel. घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 58,100 से नीचे और निफ्टी 17,350 के नीचे हुए बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे की गिरावट से रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 3% से अधिक लुढ़ककर $88 प्रति बैरल के करीब थी। इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन का, जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हैं। सुषमा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सोनू, थैंक यू। और अब शेयर बाजार से शुरुआत करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी आज 1.5% से अधिक की गिरावट में रहे। वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी के बीच दोनों सूचकांकों में ये गिरावट आई। सेंसेक्स 58,100 के नीचे और निफ्टी 17,350 के नीचे बंद हुए। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.73% की मंदी से 1,021 अंकों की गिरावट दर्ज करते हुए 58,099 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.72% के नुकसान से 302 अंक कम होकर 17,327 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां गिरावट तुलनात्मक रूप से और भी अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.28% लुढ़क गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.92% की भारी गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today fell more than 1.5%. Both stock indices declined amid a fall in the global share markets. The Sensex finished below 58,100 points, while Nifty settled below 17,350 level. Sensex lost 1,021 points, or 1.73%, to close at 58,099 level. Nifty also plunged by 302 points, or 1.72%, to end at 17,327. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index tumbled 2.28% and the small-cap index ended 1.92% down. In the Sensex pack, 3 companies posted gains while 27 logged losses. Sun Pharma climbed 1.5% and Tata Steel gained 0.6%. On the other hand, Power Grid tumbled 7.9%. Mahindra & Mahindra and State Bank of India both plunged 3% each, while Bajaj Financial Services declined 2.8%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 19 sectors logged losses. Utilities index posted a loss of 3.5%. Power sector declined 3.4%. Realty plunged 3% and finance sector ended 2.6% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 896 companies gained while 2,580 companies fell. Shares of 111 companies remained unchanged. रुपए पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी ब्याज दरों में और तेज बढ़ोतरी के संकेतों के बीच भारतीय रुपए में अतिरिक्त गिरावट आ गई और वह डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर होकर 80 रुपये 99 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.83% बढ़कर मध्य 2002 के बाद के अपने उच्चतम स्तर 112.28 पर था। हालांकि भारतीय रुपया अभी भी विश्व की सबसे अच्छे प्रदर्शन वाली मुद्राओं में से एक बना हुआ है। सुषमा जी, आज जो हमने चौतरफा गिरावट देखी है भारतीय बाजार में, और जैसा कि हमने बताया कि ये वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच आई है, इसके पीछे आप प्रमुख कारण क्या मानती हैं? कितना आपको चिंताजनक लगता है आगे का आउटलुक? देखिए, इनके कारण तो बिल्कुल साफ हैं। पहली बात तो ये है कि यूएस की फेडरल रिजर्व
ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं 75 बेसिस पॉइंट्स, और उन्होंने अपना टारगेट इंटरेस्ट रेट 3 to I think 3.5 रखा है अभी, तो 3.5%। तो इससे ये एक्सपेक्टेशन ये भी है कि हमारे देश में भी आरबीआई 30 सितंबर को शायद 50 बेसिस पॉइंट्स करीबन इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी। इसको फेडरल रिजर्व को छोड़िए, यूरोप में बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई हैं, और ये आप यूके को देखिए, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, तो कई देशों में सेंट्रल बैंक्स ने साइमल्टेनियसली इंटरेस्ट रेट हाइक्स इम्प्लीमेंट किए हैं। अब इससे क्या हुआ है कि ये जो हमारे देश में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अब तक पिछले हफ्ते तक समझ लीजिए कि यहाँ पर ये इनफ्लो आ रहा था, हालांकि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईआईज नहीं जा रही थी इतनी, लेकिन हमारे देश में, हमारे स्टॉक मार्केट्स में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स काफी आ रही थी। इसका रिवर्स फ्लो अब वापस चला गया है। ये जो एफआईआईज हैं, ये अब वापस, मेरे ख्याल लेटेस्ट डेटा ये है कि $125 मिलियन की इस हफ्ते मतलब आउटफ्लो हुआ है। और मेरे ख्याल में अब पहले दो हफ्ते पहले मैं आपके प्रोग्राम में आई थी और शायद मैं बता रही थी कि रिकॉर्ड लेवल्स की एफआईआई इन्फ्लोज हुई है, तो ये बिल्कुल रिवर्स हुआ है। ये तो सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में ये है। और दूसरी बात ये है, अगर अब देखें बाकी विश्व भर सारी मार्केट्स, इसके बारे में शायद आपने चर्चा भी की है कि वहां भी गिरावट आई है मार्केट्स में। तीसरी बात ये है, ये भी आपने इसका जिक्र किया है कि रुपए की जो स्थिति है वो गिरी हुई है, 80 रुपए से ऊपर पहले मतलब लाइफ टाइम लो पे आ गई है। हालांकि जैसे आप कह रहे हैं कि कंपेयर टू अदर करेंसीज ये अच्छा माना जा रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, और ये जो आउटफ्लो चल रहा है इसकी वजह से ये तीसरे दिन चल रहा है मंदी का माहौल। Sushma, you mentioned about profit booking in the markets today, yes, with the FIIs, FPIs being the net sellers to the tune of 2,900 crore rupees in today's equity trade itself. Do you see the situation improving when the markets open next week, today being the last day of this week's trading session? You've had the FNO expiry on Thursday. How predictable or unpredictable are the FIIs likely to be next week? Well, I would say that you would probably see a continuing trend of FIIs going out next week also. But at the same time, I don't think the outlook we should not consider the outlook very pessimistic. The fact is that the Indian markets have been, maintaining their bullish trend right up to 3 or 4 days ago, compared to global markets, which have been falling consistently. Asian markets, for instance, they have been, I think the latest is that they are at 6-month lows right now, and they have, other than talking about other Asian countries, their markets are also have been showing a very bearish trend. So we have been going against the current, as it were, and Indian markets have been standing out on that front. So therefore, a slight decline at this time should not be seen as something very negative, but one should expect next week that this trend will continue. और आप जो कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म किया है भारतीय बाजार ने बाकी बाजारों को हाल के दिनों में, उसी तर्ज पर अगर हम यूएस और हमारी सिचुएशन को कंपेयर करें, यूएस में 8.3 से 2% लाना है इन्फ्लेशन को, हमारा 7% सिर्फ 1% दूर है हमारे टारगेट के अपर लिमिट से। 7% पे हम हैं और 6% एक्सेप्टेबल है। सो आपको लगता है कि आरबीआई की पोजीशन कंपैरेटिवली इजियर है और शायद हमारा स्टैंड सॉफ्टर होगा, क्योंकि अगर हम यूएस फेड की कमेंट्री देखें तो वो भी बहुत हॉकिश आई है। आरबीआई से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है इस संदर्भ में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में अगर बाकी सेंट्रल बैंक्स हमारी तरफ देखें तो दे विल बी एनवियस ऑफ आवर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। आप ठीक कह रही हैं कि हमारा 7% से ऊपर है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ 6% के करीबन है, और हमारा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट अभी
उससे पहले मेरे ख्याल अगस्त से पहले वो 7% से शायद कम आया था। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो अमेरिका में 8.3% है, यूके में भी 8-9% है, यूरोप में, पूरे यूरोप में बहुत सारे देशों में 7-8% इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ये ऐसे देश हैं जिनका नॉर्मली इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो 2%, 3% और कभी कभी 1% होता है। तो उनकी जो 40 अमेरिका की अगर आप देखें तो 40 साल के बाद इतना बढ़ा हुआ है उनका इन्फ्लेशन। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि comparatively we are in a better position. Sushma, since we're talking about inflation, you also mentioned about how the dollar is right now rated in the US dollar index at 112, which is making the rupee relatively weak. It's at 81 to a US dollar. But, there's also the risk of importing inflation from the US because of the valuation of the dollar to the rupee. So how do you see the central bank, RBI, intervening? They've already intervened to a great extent by holding the rupee steady at below 80 to the US dollar, but now it's crossed the 80 threshold. How do you see the RBI responding to that, and can the RBI really take care of it? Well, see, the first thing, talking about whether the RBI can take care of it, I would agree with you that they have been doing a very good job in ensuring that, mind you, their target, which the RBI itself has said, was not simply to ensure that the rupee did not crash. They said that we don't mind that the rupee depreciates, but we don't want it to depreciate rapidly. So we want to, contain the speed at which it is depreciating. And if you see the level of foreign exchange reserve, it has not expended too much money. Of course, it has expended quite a bit of money, but relatively speaking to our foreign exchange reserve, it has not expended too much money in containing the situation, because the fact is that the decline of the rupee is inevitable at this stage, in comparison, as was mentioned in your news reports also, in comparison to other currencies, the rupee is still doing relatively fairly well. So the RBI can do a great deal, but I think they are going to have what you might call a holding operation and just ensure that the rupee does not crash. The second thing, of course, is that they would like to raise interest rates probably on 30th September when they have their next meeting. The expectation is that, the increase will be about 50 basis points. Of course, we can't say, but definitely they will, number one, to ensure that inflationary pressures within our country are brought down, and also in line with what is happening globally with other central banks, and India certainly cannot remain divorced from the rest of the world. सुषमा जी, इंटरेस्ट रेट्स के अलावा एक और जो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरबीआई के लिए वो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। एंड बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी सरप्लस था इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एक वर्ष पहले, अब वो लगभग लेवल हो गया है या शायद हल्का सा डेफिसिट भी है। सो इस मोर्चे पर आपको क्या लगता है, आरबीआई का क्या वो रहेगा रुख, क्योंकि फेस्टिवल डिमांड भी आने वाली है, तब भी शायद क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी जो 15% को क्रॉस कर चुकी है, अगर वो और बढ़ती है। एंड हमने हमेशा देखा है कि एफएम हमेशा कहती हैं बैंक्स को कि आप लोन्स दीजिए ताकि जो ग्रोथ है उसको इम्पेटस मिले। सो कैसे हैंडल होगी ये पूरी सिचुएशन लिक्विडिटी की? हाँ, लिक्विडिटी की आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि there is a problem of liquidity in the banking sector, and this is something that the RBI would definitely have to handle in the days coming forward. But one really has to see which instruments it will use to ensure that, it is able to increase the flow of liquidity in the system, at the same time to ensure that it does not create more inflationary pressures on the economy at this stage. So this is a very delicate balancing act that the RBI has to do. And but I must say, as I said, other countries so far have been eyeing the way the Indian Central Bank has been containing inflation, and I'm sure that it should be possible for them to do it with all the
multiplicity of instruments at their command. Sushma, the unintended and the intended consequences of inflation have always been the common man. Companies have posted growth, profits. They passed on the high cost of raw materials and intermediate goods onto the consumer, and they have maintained their margin levels, and that's also led to their share prices going up in the stock market, which is being seen as overbought. So what kind of balancing act do you see the companies play in the middle of this? Because they need the consumer to purchase their product. Wages have not gone up by much. So how do you see companies focusing their product onto the consumer in this current market? Well, I mean, this is a normal commercial activity for companies, and if they want demand to remain strong, if they want the consumer demand to remain strong, they will have to ensure that there is some moderation of prices, of product prices. They simply cannot pass on fully the increase in raw material, commodities, and input prices that have occurred as a result of the disruption in global supply chains. Definitely, it has happened in many sectors. If you see the automobile sector, and if you see even FMCG sector, so if they are thinking to pass on this entire burden onto the consumer, this is going to be a problem, obviously, for them. So I think that companies themselves recognize that they cannot afford to put the entire burden on the consumer, and they will have to bear it themselves. After all, now that the festival season is coming and demand is expected to rise, the harvest has been good. Kharif harvest has been good, barring, of course, there is a slight decline in rice due to shortfall in rain, but otherwise it seems to be a fairly good harvest. Demand is expected to be good, festival demand. So one would anticipate that companies would moderate the rate of pass-through of inflationary pressures onto the consumer. और सुषमा जी, एक और एस्पेक्ट, यूएस फेड ने जैसे कहा है कि रिसेशन, उन्होंने अपनी कमेंट्री में कहा है कि रिसेशन शायद लगभग सर्टन है कि होगा, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन जरूर कंट्रोल करना है, लेकिन उसका हम एक सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, $88 पर बैरल है आज. ये आपको लगता है कि भारत के लिए एक कहें कि कोलैटरल बेनिफिट है इस पूरी सिचुएशन का, और जिससे ये जो कॉस्ट प्रेशर्स भी हैं कंपनीज पे वो भी रिलीव होंगे टू सम एक्सटेंट? ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है. ये अगर आप देखें कि फरवरी के बाद जो दाम विश्व भर में चले गए थे, $130 पर बैरल तक चले गए थे. उसके बाद मेरे ख्याल 3-4 महीने के लिए $110-120 पर बैरल पर अटका हुआ था प्राइस, और अब देखें कि $100 से नीचे आ गया, और $100 से नीचे आ गया. अभी आपने कहा कि $88, अभी मैंने तो देखा था शायद $86 फॉर ब्रेंट क्रूड, लेकिन ठीक है, एनीवेयर अराउंड $90 हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा है. हमारा देश जो मतलब 95% हम अपनी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं. ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए, और इससे हमारे एक्सचेकर के ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. हमें याद रखना चाहिए कि जब बजट की प्रेजेंटेशन हुई थी, उस वक्त जो असेसमेंट थी कि प्राइसेस शायद $70 to $75 पर बैरल रहेंगी, वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले की बात है, तो उस हिसाब से बजटरी कैलकुलेशन हुई थी. तो उसके बाद $100 से ऊपर गए तो ऑब्वियसली एक्सचेकर के ऊपर काफी प्रेशर हो गया है, और फिस्कल डिफिसिट के ऊपर काफी प्रेशर टू कंटेन द फिस्कल डिफिसिट. तो ये एक बहुत अच्छी, जैसे आपने कहा, सिल्वर लाइनिंग आ गई है. बट डिस्पाइट ऑल दिस प्रेशर्स, आपको लगता है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ब्रीफली भारत की जो हमारे सामने जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आ रहे हैं उनके आधार पर कैसे कहेंगे आप? इस वक्त हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफी पॉजिटिव है. इसलिए मैंने कहा कि पिछले 4 दिन पहले तक तो हमारी
FIIs की इनफ्लो आ रही थी हमारी मार्केट में। क्यों? इसलिए आ रही थी क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने अच्छे थे। अगर आप जीएसटी कलेक्शंस देखें 1.4 लाख करोड़ से ऊपर जा रहे हैं हर महीने। अगर आप पेट्रोलियम कंजम्पशन देखें, अगर एक्सपोर्ट्स देखें, एक्सपोर्ट्स खैर अभी मॉडरेट हुई है, थोड़ा सा प्लाटो पे आ गई, लेकिन 2 महीने पहले तक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा एक्सपोर्ट्स का। तो ये मॉनसून का जो स्प्रेड इस साल बहुत अच्छा रहा है जी। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं ये काफी पॉजिटिव रहे हैं। सिर्फ ये है कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर मतलब जो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर, वो इस वजह से एक तो फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना, इसका पास थ्रू इफेक्ट, और फूड प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। तो ये दोनों वजह ये है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो काफी उन्होंने नुकसान किया हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। लेकिन बाकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी काफी अच्छा, अगर आप PMI सर्वे देखें तो इस हिसाब से तो अच्छा ही रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी करने के बाद अमरीकी शेयर बाजारों में गिरावट आ गई, जिसके चलते एशियाई शेयर बाजारों में आज भी मंदी का रुख था। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.8% लुढ़क गया और हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 1.2% की गिरावट रही। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.1% के नुकसान में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 7% की गिरावट दर्ज हुई। जापान के शेयर बाजार में आज कारोबार नहीं हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी आज अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान मंदी का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी और फ्रांस का कैक दोनों 2.1% के नुकसान पर थे और जर्मनी के डैक्स में 2.4% की गिरावट चल रही थी। सुषमा, वेरी ब्रीफली, could you comment about China's economic growth forecast at 3%, and do you see them breaking out because we are getting news locally about a lot of semiconductor investments into India, especially the state of Gujarat, to divert a lot of the business away from China and Taiwan into India itself? Well, there obviously this news that is coming, of course, from Gujarat, that's well known. Vedanta Foxconn is investing over there, but this is a very important development, of course, but it must be tempered. This perspective must be tempered with the fact that chip units or chip fabrication is not done just by one set of manufacturing facilities. There has to be matching facilities, to process the chips, and as a result of which you would find, traditionally is it's not such an old industry, but if you see how chip fabrication is done, it is very much linked to global supply chains, and you'll have different phases of the chip production in different countries. So you'll have some in one country and some in another. Of course, Taiwan is well known as a center for chip fabrication, but apart from Taiwan, you would have this entire process taking place in several countries. So it is not just that Vedanta Foxconn will set this up. You will require more facilities elsewhere. So I think it's important to recognize that there is scope for more investment, right, and it need not just be in Gujarat, it can be in other states also. And also briefly your comments on the euro and the dollar. There seems to be a parity now, especially with the dollar index, dollar strengthening in that index. But I think I think this would be a temporary phase. I would still say that in the long term, you are going to see that the dollar will be a stronger currency. I think parity is probably a temporary phase right now. Let's have a look at the U.S. stock market now. Major Wall Street indices ended lower yesterday. The U.S. share markets fell for a third straight session as investors reacted to the Fed Reserve's latest aggressive move to rein in inflation by selling growth stocks, including technology companies. The Dow Jones Industrial Average slipped 0.4%, the S&P 500 declined 0.8%, and the Nasdaq Composite Index ended 1.4% down. What's your take on the U.S. stock market when it reopens again?
The volatility index is much higher as compared to India. It's almost 27, 28. Do you see the markets going down further, especially with the Fed announcing that there would be further rate increases till the end of this year? Yes, well, it could go down further, but we also have to understand that there are many positive features in the U.S. economy also, and one is, for instance, in employment. Their employment data is showing, a very positive scenario, unlike, I would say, ours. So there are many positive elements of economic indicators there, and it depends on, what information you might have coming forward next week. So सुषमा जी, जो बात होती है रिसेशन की, उसमें हमेशा ये होता है कि रिसेशन कितनी डीप होगी. तो जो आपने अभी बताया कि वहाँ सिचुएशन कई इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर बहुत अच्छी, आपको लगता है कि ये शैलो रिसेशन होगी? हाँ, अब ये शैलो या डीप ये मुश्किल है कहना, पर मेरे ख्याल में ये जो शैलो मतलब जनरली मेरा इंप्रेशन होगा कि शैलो होगा, क्योंकि ये जो सारी स्थिति है, ये जो तकलीफ है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एक बहुत बड़े डेवलपमेंट से हुई है, और वो है यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये सडन एकदम से ये डेवलपमेंट हुआ है. तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स यूएस इकोनॉमी में है जिससे रिसेशन आना चाहिए. We're also seeing their treasury yields across 4% for the 1 year and the 2 year bonds. What does that mean for those who are investing in their markets, in their debt securities like India and China? But for India and China, I mean, I think yields are going up there, and I think yields are, I don't know precisely what is the market here. I've not looked at it in the last few days. But yields are going up in most countries right now, especially if you see UK. UK just now, it's just announced certain tax cuts, and bond yields have gone up over there also. Right. So I think that this is a situation, it's a developing situation as far as bond markets are concerned globally. Let's have a look at the oil market now. Global crude oil prices today plunged more than 3% as demand fears were stoked by rising interest rates and a stronger dollar. However, fresh concerns in the Russia-Ukraine conflict and deadlock in the Iran nuclear deal talks capped the losses. In intraday trade, Brent crude was trading at $87.90 per barrel, while WTI crude prices were at $80.70 per barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 600 रुपए की गिरावट से 49,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 1,310 रुपए की गिरावट से 56,715 रुपए प्रति किलो हो गई. उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,654.40 प्रति आउंस पर था. चांदी भी मंदी दर्ज करती हुई $19.10 प्रति आउंस पर थी. समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें इस चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आप शामिल हुई मार्केट मंत्र पे और आपने विभिन्न पहलुओं पर हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी. थैंक यू सर. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks witnessed losses of more than 1.5%. Sensex closes below 58,100 points. Nifty settles below 17,350. Rupee weakens by 12 paise to hit a record low against the US currency. Then Brent crude prices plunge more than 3% to hover around $88 per barrel. घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की गिरावट. सेंसेक्स 58,100 के नीचे और निफ्टी 17,350 के नीचे हुए बंद. डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे की गिरावट से रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 3% से अधिक लुढ़ककर $88 प्रति बैरल के करीब थी. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.